Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the polysaccharides. So let's move to the whiteboard. The third type of carbohydrates are the polysaccharides. As the name indicates, dear student, poly means many, yeah? But how many? That depends upon the size of the sugar. So at least there should be more than 10. So these are the type or class of carbohydrates that yield more than 10 monosaccharides upon hydrolysis are called polysaccharides. Clear? So that is the definition of this polysaccharides. ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जब उनका हाइड्रोलिसिस हो तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स हासिल हों, so they are called as polysaccharides. Clear? Now dear students, some general information regarding them, their features. An important MCQ is here, that is the polysaccharides are the most complex and most abundant carbohydrates in nature. That is an important MCQ. The most abundant and the most complex carbohydrates in nature are. तो उसमें ऑप्शन आपके पास आएगी oligosaccharides, polysaccharides, monosaccharides, or none of them, or all of them. So the answer will be the polysaccharides. Clear? Now, dear students, they are tasteless. And they are high molecular weight sugars and are sparingly soluble in water. And most of them, they are insoluble in water. Clear? And they are also
they are mostly branched. Clear? Mostly branched. ये MCQ के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है. Here are some its examples. That is cellulose, hemicellulose, starch, glycogen, agar, dextrin, and pectin, and chitin, etc. All these are some familiar examples of the polysaccharides. Clear? Now, dear students, 3 of them have been discussed in our book. Number 1 is starch. तो dear students, starch जो है, it is tasteless, the animals take carbs or carbohydrates in the form of starch. Clear? Dear students, starch is of 2 types. It is of 2 types. There are 2 types of starches. Now these are the types of starch. Number 1 is amylose, and number 2 is amylopectin. Clear? So these are 2 types of starches. Amylose is unbranched starch and soluble in hot water. Clear? It is soluble in hot water. While amylopectin is the type of starch that is branched and it is insoluble in hot or cold water. Clear? Dear students, one more thing, that is the iodine test.
Starch gives blue color with iodine. Clear? So that is the iodine test. If you have been given a solution and checked whether it has starch or not, तो उसमें स्टार्च को चेक करने के लिए उस शुगर सोल्यूशन में आप ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के. अगर ड्रॉप्स डालने से उसका कलर ब्लू या डार्क ब्लू कलर का हो जाए, इट मीन्स द स्टार्च इज प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन. और अगर उसमें ना हो, सो इट मीन्स देयर इज नो स्टार्च. क्लियर? The second type of polysaccharide which has been discussed in our book is glycogen. आपने इससे पहले इसका नाम सुन रखा है, glycogen. It is also called as an animal starch. इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है. The surplus glucose is converted into glycogen and stored in the liver and muscles. Clear? Let's suppose कि आपने खाना खाया, like in the form of rice or in the form of sugar or whatever, आपने खाया, कार्बोहाइड्रेट्स लिए, और आपकी बॉडी को ज़रूरत थी जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की वो सेल को पहुंचा दी गई. लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स बच जाते हैं, मीन अगर कोई ग्लूकोज बच जाती है, देन दैट वेरी सरप्लस ग्लूकोज, यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में है, उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में, और फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है बॉडी में दो जगहों पर, आइदर इन द लिवर और इन द मसल सेल्स. क्लियर? और स्टूडेंट्स, इट इज insoluble in water. Clear? And glycogen is the storage form of carbohydrates in animals, especially if we are talking about the human beings, the humans. Clear? Now it's iodine test. So as far as iodine test is concerned, glycogen gives red color with iodine test. Clear? तो चेक करना होगा कि हमारे पास कोई शुगर सोल्यूशन है, उसमें ग्लाइकोजन मौजूद है कि नहीं है. तो उस ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स, उसमें सोल्यूशन, उस शुगर सोल्यूशन के अंदर आयोडीन ड्रॉप्स डाल जाते हैं. इफ़ द कलर बिकम्स रेड, इट मीन्स द ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट. इफ नॉट, देन इट इज नॉट. क्लियर? नाउ द थर्ड वन, the third polysaccharide which has been discussed in our book, which has been discussed in our syllabus, is the cellulose.
It is cellulose. Clear? So cellulose, dear students, it is the most abundant carbohydrate in nature. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ी, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, और ओलिगोसेक्राइड्स में आके डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा, और फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। तो इन सब में पॉलीसेक्राइड्स वैसे कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और पॉलीसेक्राइड्स में एक स्टार्च और दूसरे नंबर पर सेलुलोज। सेलुलोज दैट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। और डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग दैट cotton is the pure form of cellulose. तो इस बात को याद रखना है, important MCQ है, that cotton is the pure form of cellulose. Clear? It is present in the cell wall the primary cell wall of plants. Clear? And it is highly insoluble. It is highly insoluble in water. And one more thing, dear students, the humans cannot digest cellulose because they lack the enzyme that is cellulase to digest cellulose. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, इसका ब्रेकडाउन करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड सेलुलेज, जो कि इंसानों के पास नहीं है। सो दैट इज़ वाई ये हमारे अंदर जो डाइजेस्ट नहीं होगी। और डियर स्टूडेंट्स, द हर्बीवोर्स have microorganisms in their gut, that is some bacteria and protozoans and yeast that provide or that secrete a cellulase required for cellulose digestion. इस वजह से प्लांट्स उनको खाने से उनको उनसे एनर्जी मिलती है, उनको ज़्यादा ताकत मिलती है, बिकॉज हर्बीवोर्स किन्हें कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो प्लांट किंगडम को खाएं उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, उसमें भी इसकी डिटेल्स आएंगी। एंड इन द लास्ट देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च।
सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। इसका सिर्फ एक ही रिंग मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा बिकॉज ऑफ स्पेस। सो इस तरह से ये मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, या चेन फॉर्म। और ये लास्ट टू जो ये ग्लूकोज रिंग्स हैं, इनको मैं अभी बाइंड करके आपको दिखाता हूँ। Here it is. And here we go. Just to make it more neat like this. So, तो इस तरह से ये एक रिंग मैंने बनवा दिया। इसी तरह से ये 3 रिंग्स है जैसे हमारे बुक में बने हुए हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात जो सेलुलोज के हवाले से है, दैट इज द सेलुलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन। मीन्स कि जो इसका आयोडीन टेस्ट है, जब भी चेक करना हो किसी सॉल्यूशन में कि सेलुलोज है कि नहीं है, आप जब उसमें ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन के, सो देयर विल बी नो कलर चेंज। क्लियर? सो इट मीन्स कि सॉल्यूशन के अंदर, उस शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो सेलुलोज है वो मौजूद है। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लिपिड्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।